बातमी आहे सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या मलेरियावरील लसीच्या अनावरण सोहळ्याची सोमवार दिनांक 20 मे रोजी पुणे येथील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया येथे मलेरियावरील लसीचे अनावरण करण्यात आले। यावेळी युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेचे ब्रँड अँबॅसिडर तथा लॉस एंजेलिस शहराचे माजी महापौर एरिक ग्रेसिटी उपस्थित होते। त्याचबरोबर सिरम इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर आदर पुनावाला व इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। ही मलेरियावरील लस आफ्रिका खंडातील देशांना स्वस्त दरात मिळवून देण्याचा निर्धार यावेळी सिरम इन्स्टिट्यूट कडून करण्यात आला। त्याचबरोबर दोन्ही देशातील मान्यवरांकडून श्रीफळ वाढून व फ्लॅग होस्टिंग करून मलेरियाच्या लसीचे कंटेनर रवाना करण्यात आले। पाहूया। Now see, this is a vaccine for malaria for the African continent. ये vaccine India के लिए नहीं है क्योंकि this is against a parasite that you find in Africa. And so we're giving this vaccine at a very affordable price so that it's widely available and accessible to all the African countries and the other lower middle income countries. तो इस हिसाब से हमने ये partnership University of Oxford, नोवावैक्स और यूएस गवर्नमेंट ने भी जो सपोर्ट दिया था नोवावैक्स की वजह से नोवावैक्स को दिया था उनकी वजह से ये सब हुआ और ये पॉसिबल था। और आज ये फ्लैग ऑफ था। ये 7-8 साल लगे हमें ये वैक्सीन बनाने और आपने ये विटनेस किया कि ये वैक्सीन अभी is on its way to the airport. Where is it going? The first one? The African continent, so there's about 7-8 countries. Central Africa. And you have also funded the phase 3 Yes, clinical so this was fully funded by us. The process was developed here by us in India. So and it's of course made here in India. But the vaccine is not for India. No, because the parasite for which this vaccine is made, it's for Africa. कुछ सालों में शायद 5 साल के बाद we could make one for India also. और इंडिया में तो हम ये डेंगू वैक्सीन 2-3 साल में तो What does he say about the tie-up with? Yes, so the dengue vaccine we got also from the US, from NIH, and we're doing some clinical trials. And after the trials are over, in about 2-3 years' time, we can expect a vaccine in India for dengue. How much will you be manufacturing this number of? So malaria, we have 100 million dose capacity every year. Thank you.